नमस्कार, सलाम, याली मदद, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग टू कनाडा। आप सबका स्वागत है हमारे प्रोग्राम कैलगरी फोकस में। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट अमृत एक बार फिर से आपके साथ जुड़ा हूं और आज बहुत फ़ख्र का दिन है बिकॉज़ हमारे साथ एक ऐसे मेहमान जुड़े हैं जो कि अपनी लाइफ स्टोरी से आपको डेफिनेटली हैरान कर देंगे और आई एम वेरी श्योर कि आप जब उनकी स्टोरी सुनेंगे तो इट विल बी अ ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर एवरीवन। हर देश के 3 जो मेन स्तंभ होते हैं वो होता है उनका कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशियल सिस्टम और ब्यूरोक्रेट्स जो कि उस देश को चलाते हैं। लेकिन हर एक देश के जो 3 स्तंभ मैं मानता हूँ वो 3 स्तंभ जो कि हमारे बॉर्डर्स की रक्षा करते हैं, हमारी सीमाओं की सुरक्षा करते हैं और देशवासियों की सुरक्षा करते हैं, और वो हैं एयरफोर्स, नेवी और आर्मी। हम इंडिया छोड़ के या अपने कोई भी मुल्क को छोड़कर कनाडा आए और कनाडा को अपना घर बनाया, अपना देश बनाया और यहाँ पर अपनी रोज़ी रोटी के होड़ में हम लोग लग गए। लेकिन कहीं हम भूल गए कि हमारा भी कुछ फ़र्ज़ है इस देश के लिए जो हमें इतना कुछ दे रहा है, हमारी ज़िंदगी को आगे बढ़ा रहा है। हम अपने मुल्क में रहते तो क्या हम ये सोचते? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बहुत ही कम लोग हमारे कम्युनिटी से कह सकता हूँ या साउथ ईस्ट एशिया से कह सकता हूँ, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश ये कंट्रीज़ आती हैं, बहुत कम लोग हमने देखे हैं जो कि कैनेडियन फोर्सेस में जाते हैं। ऐसा क्यों है? क्यों लोग इतना डरते हैं, या क्या ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से लोग अपने बच्चों को या खुद अगर वो यंग एज पे आए हैं इस कैरियर को नहीं अपनाते? आज हमारे साथ सर्जेंट कबीर बेंस जी आए हैं। आइए मिलकर सबसे पहले उनका स्वागत करें और उनसे जानें कि कैसे उन्होंने अपनी लाइफ यहाँ पे शुरू करी और ये सफ़र जो आज तक वो कर रहे हैं ये कैसा रहा। मैं स्वागत करना चाहूँगा सर्जेंट कबीर बेंस जी का। पाजी बहुत बहुत स्वागत है। Thank you so much for having me here. आज मौसम जो है थोड़ा सा ख़राब है और इसकी वजह से मैं माफ़ी चाहता हूँ कि थोड़ा सा प्रोग्राम हमारा लेट हो गया, लेकिन देर आए दुरुस्त आए और मुझे पक्का पता है कि आपसे बातचीत करके जो भी हमें जानने को मिलेगा दैट विल बी ग्रेट। हिंदी ठीक रहेगी, पंजाबी या इंग्लिश, जो आप ठीक रहें, या मिक्स रहेगा? मिक्स इज गुड, राइट। कबीर जी was born in चंडीगढ़ और उनके फादर साहब जो हैं महिलपुर से हैं, माता जी जलंधर से, और 1994 में 1994 में ये कनाडा इमिग्रेट हुए। आइए इनसे पूछते हैं कि ये जर्नी कैसी रही और आज ये सर्जेंट हैं कैनेडियन फोर्सेस में, तो कैसे यहाँ तक पहुँचे। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन वेलकम टू द शो। और जो भी हम लोग बातचीत कर रहे थे प्रोग्राम से पहले, एक बहुत ही बड़ा डिसीजन होता है कि आप यहाँ पर आते हैं एक डिफरेंट मुल्क में एज एन इमिग्रेंट, और यहाँ पर आकर आप फोर्सेस को ज्वाइन करते हैं। सबसे पहले तो ये बताएं, ये डिसीजन आपका था या आपके पेरेंट्स? This was actually my decision. Influence तो इंडिया से था जी, because dad military में थे, grandfather भी military में थे जी, and it was just a natural thing to go towards. When we came to Canada, I wasn't of age to go into the military. Right. I had to wait a couple of years. I had to wait till 97, Mhm. I was 17, and it was the 4 of us that came to Canada. Both my parents, my brother, and I.
and he was a year older than me. And the day I turned 17, I decided to go up to the recruiting center in Toronto and go enlist. We had no idea which trade we would go into, but both of us ended up in the army. He went for the engineers, 2nd Field Engineer Regiment, and I went to the Toronto Scottish Regiment in Toronto. And that's where I started my career with the military. And it was just it was a desire that was there. The main influence that caused me to go into that direction was through education. Right. Right? When you go into Canada's history, there's so much information out there that people don't realize that Canada has been fighting for years. Right. Right? First Right. World War, Second World War, Boer War before that. Right. And then all the other wars that went with that. Right. Those were one of the things that influenced me. The other thing also influenced me was during the time the Yugoslavia conflict was going on, the former Yugoslavia conflict was going on, and there was videos of Canadian soldiers being tied to the bridges so that the NATO airplanes wouldn't bomb the bridges. That was another thing that kind of lit this fire inside of me. And then as soon as I turned 17, it was either you turn around and go to a job that is just a job, maybe you don't enjoy it, or you go do something that is worthwhile and you serve yourself and you serve your country at the same time. It's a twofold. Absolutely. And the adventures there, the travel, all of your benefits and everything is all included in there. We will talk about that for sure, because again, the travel and benefit comes with that. Yes. But before we go to that phase, it's a very big decision for parents to send their kids, especially in a different country, in this field. If you talk about, as you were saying, कि फादर साहब और ग्रैंडफादर भी आर्मी में फोर्सेस में रहे हैं, लेकिन इंडिया में जब तक मैं रहा, एक बहुत नोन फैक्ट था कि अगर आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स फोर्सेस में रहे हैं तो आप भी वही कैरियर लेते हैं. बहुत कम लोग होते हैं जो कैरियर छोड़ के, डिफरेंट कैरियर छोड़ के आर्मी या फोर्सेस ज्वाइन करते हैं. अगेन आप वहाँ से यहाँ आए, यहाँ पर भी आपने वो जो एक फैमिली का कैरियर पाथ रहा है सर्विस का, वो आपने यहाँ पे भी चुना. एक बहुत बड़ा डिसीजन है, एक बहुत बड़ा, यू नो, आई फील इट्स अ बिग थिंग, बिकॉज यहाँ पर लोग आकर भटक जाते हैं. यहाँ पर लोग आकर भटकना इन द सेंस दे गेट इनटू अ लाइफ जहाँ पर उनको अपनी रोजी रोटी कमानी है, अपने आप को दोबारा खड़ा करना है. बिकॉज यहाँ पर आकर nobody is in the same boat. Some people come with millions of dollars, somebody comes with nothing, right? So when you come here, you have to start your life from scratch. Yes. और लोगों को ये लगता है कि यार कौन जाके आर्मी में या उसमें धक्के खाएगा, या किस तरह के रिक्रूटमेंट होगी, क्या क्या करना पड़ेगा. लेकिन उससे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है वो जज्बा. जैसे आपने कहा कि बोस्निया में आपने देखा कि किस तरह से कैनेडियन सोल्जर्स को बांध दिया जाता था कि नेटो के प्लेन्स ना बॉम्बार्डमेंट करें. ये सब ने देखा होगा, लेकिन वो फायर जो आपके अंदर आई वो शायद लोगों में जली लेकिन बंद हो गई. इसलिए कबीर बेंस आज इस लेवल पे है और कई लोग मैकडॉनल्ड्स में बैठे हुए हैं जो कि मैं ये नहीं कह रहा कि मैकडॉनल्ड्स की जॉब बुरी है, वो लोग भी मेहनत कर रहे हैं. लेकिन इस देश को सर्व करने का, वापस देने का जो जज्बा फोर्सेस के थ्रू हम लोग कर सकते हैं, वो शायद कोई और फील्ड में हम लोग नहीं कर सकते. क्या कहना चाहेंगे आप? Definitely, just to add on that, the other thing was this is a way of giving back to your country. Right. Because this country accepted me as an immigrant. Right. And the only way I could repay it back is by joining the forces, in my mind. क्या बात. And that's what affected my decision to join the forces. क्या बात है. अब मेरे ख्याल से जब भी राधा मैं कह सकता हूँ, जैसे ही मैंने होश संभाला अपनी ज़िंदगी में, मैंने यही सुना कि ये मत सोचो
कि देश आपके लिए क्या करता है, आप ये सोचो आप देश के लिए क्या करते हो। और ये जो जज्बा है आई बिलीव इस समय हमें साजन कबीर बेंस जी में दिखता है, और ये इस कंट्री में आके भी अपने माँ बाप का नाम रोशन कर रहे हैं, अपने देश भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, और एक जो देश को, जो कि अब कनाडा है, उसको वापस देने का जब टाइम आया है तो ये पूरी शिद्दत से, पूरे हौसले से अपनी हिस्से का जो भी इनसे बन रहा है वो इस देश को वापस दे रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम अपनी बातचीत जारी रखेंगे सर्जेंट कबीर बेंस जी के साथ। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैलगरी फोकस ओनली ऑन पंजाबी नेशनल टीवी। वेलकम बैक, एक बार फिर से स्वागत हमारे प्रोग्राम कैलगरी फोकस में। आज हम लोग बातचीत कर रहे हैं सर्जेंट कबीर बेंस जी के साथ, जो कि 1994 में कनाडा में आए और आज आर्मी में, कैनेडियन फोर्सेस में इस देश की सेवा कर रहे हैं। कबीर, दो इट वाज योर डिसीजन बट स्टिल it cannot happen without parents' support and your family's support. Yes. How they felt when you said no, I will have to go to army, this is my life, and this is how I want to live, because your parents were, your father was there in army in India, so like how did he felt? So the first thing my dad said was, don't go infantry. Okay. He said, you will be cold and you will not enjoy it. But I decided to go infantry, and my brother went for the engineers. They were both proud. My parents were both proud. Mom was a bit worried, just like every Indian mom, and she just wanted us to be safe. But there was a level of pride that my dad felt, and I still remember this one year we had Remembrance Day, and my brother and I, both of us were on parade, and there's a picture of the three of us, and my mom saying, there's my three soldiers. Wow. So it was very, very good. And the parent support was always there. They just wanted us to see the world, but they wanted us to be safe at the same time. And that's something, as kids grow up, you have to let them explore as they want, right? Because you can't keep them protected all the time. What we'll do is, we will take the same care of your children as we do ours, kind of a thing, in the military. Absolutely. Yeah. And this is the key point कि मेरे बच्चे भी उतने इम्पोर्टेंट हैं जितने आपके बच्चे हैं, और आपके बच्चे भी उतने इम्पोर्टेंट हैं जितने मेरे बच्चे हैं. Yes. जैसे मैं अपने बच्चों की खिदमत करूंगा, वैसे आपके बच्चों की भी खिदमत करूंगा. Yes. उनकी भी रक्षा करूंगा, उनके लिए भी जान दे सकता हूं, अपने बच्चों के लिए भी जान दे सकता हूं. यही एक जज्बा है कबीर जी, जो कि एक सोल्जर को बाकी लोगों से अलग करता है. ये सर्विस एक बहुत ही डिफरेंट नोबल प्रोफेशन है. हिंदुस्तान का नारा है जय जवान जय किसान. ये दो स्तंभ हैं भारतीय देश के, जो कि उस देश को चला रहे हैं और उस देश की सेवा कर रहे हैं. वैसे ही आप यहाँ पर आकर इस देश के लिए आगे बढ़कर आपने इस प्रोफेशन में अपने आप को डाला, और आज एवरीबडी सो प्राउड ऑफ यू. एक चीज़ जो मैं आपसे यहाँ पर पूछना चाहूँगा, दैट इज़, आपने कहा कि पेरेंट्स थोड़े बहुत वरिड थे कि यू विल बी कॉल्ड, एंड ये बहुत लोगों का एक एप्रीहेंशन है. बहुत लोगों को थोड़ा सा डर लगता है कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ना हो जाए, लोग आपको डिफरेंट तरीके से देखें ना. डिड यू फील, टू वेरी ऑनेस्ट, कभी ऐसा लगा कि इधर उधर चलता है बट कहीं आपको ऐसा लगा कि नहीं यार, ये मेरे साथ गलत हुआ क्योंकि मैं कलर्ड हूँ या मैं कहीं और इमिग्रेंट हूँ, कभी ऐसा लगा? No, in the forces I have never felt that. इक्वलिटी है. Yes, सब लोगों को सेम इज्जत से देखा जाता है. Yes. ये एक बहुत बड़ा लोगों का ख्याल है, जिन लोगों से मैं मिलता हूँ, कि नहीं यार वहाँ पर पता नहीं किस तरह से ट्रीट किया जाएगा मेरे बच्चों को, किस तरह से वो लोग देखेंगे क्योंकि हम लोग इमिग्रेंट्स हैं, हमको नीचा ना दिखाया जाए. लेकिन आज कबीर यहाँ पे बैठे हैं और ही कैन प्राउडली से कि ऐसा कुछ नहीं है. एक ये सिर्फ सोच है जो आपको वहाँ पर बांध के रखती है. बाहर निकलें, उस सोच से बाहर निकलें और अपने आप को इस देश के साथ जोड़ें. अगेन, ये देश हमें बहुत कुछ दे रहा है, हमारी ज़िंदगी को संवार रहा है. हम लोग अपने बच्चों के लिए या किसी भी रीज़न से यहाँ पर आए हैं, लेकिन
उन बच्चों को भी हमें ज़रूर सिखाना है कि पैसा कमाना ही सब कुछ नहीं है। आजकल हमें बहुत कुछ देखने को मिलता है, एंड कबीर जी, यू विल बी ऑल्सो knowing it, lot of young kids going into drugs, lot of young kids going after money and doing in illegal businesses, and they see people driving good cars and wearing branded clothes, and they want to be in that stream of making good money in very short time. बट अगेन मैं कहीं ना कहीं उसके अंदर माँ बाप की भी गलती मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने उनको इतना टाइम नहीं दिया, सही जगह से सही तरह से उनको समझाया नहीं। एंड आई बिलीव फोर्सेस एक ऐसी चीज़ है जो आपको डिसिप्लिन करती है, वो आपको एक सही राह दिखाती है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, जब से आपने ज्वाइन किया फोर्सेस को, क्या एक्सपीरियंसेस रहे आपके, कहाँ कहाँ घूमे, क्या क्या आपको बेनिफिट्स मिलते हैं? आप थोड़ा सा संक्षेप में 5 मिनट में हमें बताएं, पेरेंट्स को बताएं, जो लोग हमें सुन रहे हैं, वो भाई बहनों को बताएं जो आपको सुन रहे हैं। Yes. So, as far as travel is concerned, I went to Bosnia, served with 3R Sierra Pair Company in 2001, and it was quite amazing because I went to a totally different country. Right. And help keep the peace, Right. and ensure people who required help were given help. Wow. But at the same time, while you're deployed in a country, you do get time off. Right. So sometimes you have 3 days off, sometimes you have 2 weeks off. So I got to travel down to Split, which is in Croatia, and I had a 3 days off over there, and then after that was my 2-week vacation, which was in Spain, Barcelona, and Madrid, and then Ibiza, Wow. and then back to Bosnia. So right there, what that does is it gives you the sense of adventure. It gives you the chance to travel to a different country and travel to other countries while you're in the different country, right? Absolutely. And at the same time, keeping the thoughts and values of people protected, and ensuring you focus pride on Canada's name as a soldier. So those are some of the things that we did. And experience-wise, I also provided support during the ice storms in Ottawa and in Toronto. Wow. And that was it was exciting because it was something new, and I was going to go help my country and make sure the people of the country and the ethics and values and everything are protected at the same time. And that was another good experience. I have traveled all across Canada, so I've traveled New Brunswick, almost all of Ontario. I've done Northwest Territories. I went to Yellowknife, Fort Providence, Alberta, almost all over Alberta, Winnipeg, or Manitoba, and then Saskatchewan. Went to Base Dundurn, and pretty much, actually, the only one that's missing is BC. And, well, I've been to Quebec too, so Quebec was beautiful. आप देख सकते हैं कि आपका ट्रैवल करने का जो एक सपना, साथ में एडवेंचर करने का सपना, साथ में देश को सर्व करने का सपना, सब कुछ साकार हो सकता है एक जज्बे से, वो है देश की सेवा। एंड कबीर जी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई एम नॉट गोइंग इनटू द निटी-ग्रिटीज, बट आई थिंक द पे इज गुड, वेयर यू कैन हैव अ डिसेंट एंड नाइस लाइफ विद योर फैमिली। Yes, it's competitive pay, but what also comes along with the pay is full medical coverage, healthcare, mental health, and then you have fitness facilities that are provided while you're on the base and things like that. And also your food is covered too while you're on the base. So. My father-in-law was in Air Force, और हमारे हिंदुस्तान में तो सबसे पहले ही होता था, यार कोई फोर्सेस में जानता है क्या हो गया, कैंटीन से दारू मंगानी है यार। तो इसलिए वो एक अपना पर्क होता था कि यार कैंटीन से दारू मंगा लो, शादी ब्याह में वो तो सस्ती मिल जाएगी वहाँ से, देखो कोई है, कोई चाचा ताया भतीजा आपका। बट जोक्स अपार्ट, एक बहुत ही डिफरेंट लाइफ, और आज सर्जेंट कबीर हमारे साथ हैं और ये बता रहे हैं कि किस तरह से इन्होंने ट्रैवल किया, एक अच्छी लाइफ, अच्छी कंपेटिटिव
वेजेस मिलती हैं जो भी किसी भी इंडस्ट्री में होती हैं, प्लस फुल कवरेज आपको मेडिकल और जो भी इन्होंने बेनिफिट्स बताए, दे आर देयर. यू मस्ट इंस्पायर योरसेल्फ, क्योंकि अगेन अगर हम लोग इस देश का हिस्सा नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा. इस देश ने हमें अपनाया है, एज कबीर जी ने भी बोला. तो थोड़ा सोचें और आगे बढ़कर इस प्रोफेशन को अपनाने की बात ज़रूर एक बार अपने मन में लाएं. एक छोटा सा ब्रेक के बाद मिलेंगे. आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम कैलगरी फोकस, ओनली ऑन पंजाबी नेशनल टीवी. एक बार फिर से स्वागत हमारे प्रोग्राम कैलगरी फोकस में. आज हम बातचीत कर रहे हैं हमारे अपने सर्जेंट कबीर बेंस जी के साथ. सर, we were talking about your elder brother who joined with you. Can you tell something about him and how your journey went with him? Oh, it was great. We were pretty close, brothers being brothers, right? So it was always he was better than me kind of a thing. And that was the friendly competition that we always had. So, like I said, the day we turned, I turned 17, we decided to go join the military. And he decided to join the engineers, and I went to the infantry. And it just so happened, both of us were on basic training at the same time in the same building. Wow. And that just happened to be. And I remember till today, the one day he was severely ill, and he had a high fever. So I snuck out of where I was supposed to be down to his floor, and then went and got him some Tylenol. I'm like, here, take some. It was either you worked through it, so you could go to the doctor, and then the doctor would be like, okay, well, you're sick, so we'll have to send you back. And he didn't want to do that. He was too headstrong. Wow. So he decided to suck it up, like they say, and then I gave him his Tylenol, and he was all good to go in a couple of days. So, yeah, and then it was very enjoyable. We'd cross paths all the time. Sometimes in the middle of the night on an exercise, someone would yell, "Bains!" And I'd stand up, I'd go, "Yes, who are you?" "I'm Bains." "Oh, I'm looking for the other Bains." And he'd be somewhere else because he was an engineer. So it was quite enjoyable. And we also, actually, our last exercise together, it was really tough. It was a tough night, and the next morning we were supposed to go do some maneuvers, and it's very interesting to see him there while I was there, and the sun was coming up, and it was just a heavenly sight. It was pretty cool. But yeah, since then he decided to leave us, and life comes in, life happens, and we still remember him. And people can go away, but the memories always stay. And wherever he is, he must be very proud of you guys. Yes. For sure. अभी आपकी फैमिली में कौन-कौन है? So, family has grown now. So I have both my parents that live with me in Calgary. I got married. My wife, Jennifer Bains, and I have two kids, a boy and a girl. Wow. Sophia and Nicholas. Sophia being the older one, she's the golden child, and then Nicholas being the boy, he's the golden child too. So both of them are perfect for me. And do you think they will be choosing the same career as yours or something different? Well, it's their choice, because But like you said, what's your opinion, or what do you think? well, I hope they do. Yeah, there we go. So, because the main thing with parents, there's so much to do. You want to establish your children into a good job. Absolutely. Or send them down a path where they can do something meaningful. Absolutely. So when it comes to the forces, the one thing parents always worry about is how do we put the kids through school. Right. So, and that's where the option for the forces comes in, because we have diploma programs, we have a university program, both of them are paid for, and the diploma program is for non-commissioned members, and the university program is for officers. And all that happens over there is you go do your education, and then you serve the country after that. बहुत कम टाइम हमारे पास, और आज के प्रोग्राम का पार्ट 1 आप देख रहे हैं. पार्ट 2 में हमारे साथ एक और सज्जन जुड़ेंगे, और वो हमें बताएंगी कि कैसे आप
फोर्सेस में जा सकते हैं, कैसे आप उनका हिस्सा बन सकते हैं, रिक्रूटमेंट कैसे होती है, क्या क्या एजुकेशन आपके लिए ज़रूरी है, कैसी तैयारी आपको करनी चाहिए, कहाँ कहाँ पे आपको इनकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ये सब मैं आपके लिए पेश करूँगा हमारे अगले पार्ट 2 में, जो कि नेक्स्ट वीक आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जाने से पहले और आज का प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले मैं 1 मिनट देना चाहूँगा सर्जेंट, जो कि कबीर बेंस जी को, जो हमें बताएंगे कि वो क्या फील करते हैं और क्या अपील करना चाहेंगे उन सारे पेरेंट्स से जो कि आज हमें सुन रहे हैं, वो सारे बच्चे जो आज हमें सुन रहे हैं। प्लीज़ सर। What I would like to say to all the parents is, we will take care of your kids, and we will ensure they are safe with us as they are with you. We have over 100 jobs that your children can attempt to get into, and we have good family care, medical, dental benefits. We have gym facilities, state-of-the-art gym facilities, and give us a chance. That's pretty much it. क्या बात है। तो आपने कबीर बेंस जी को सुना, उनकी लाइफ एक बहुत ही अमेजिंग लाइफ रही है, और वो इसलिए क्योंकि वो इस देश की सेवा में लगे हैं, और एक सेटिस्फेक्शन मिलती है, एक अपने आप को कहने का मौका मिलता है, हाँ, कि मैंने भी कुछ किया अपने देश के लिए। अब जबकि हम कनाडा में रहते हैं, यही हमारा देश है, इसी को हमने सेवा देनी है। मैं ये नहीं कह रहा हम अपने रूट्स को भूल जाएं या हम अपने रिस्पेक्टिव कंट्रीज़ के लिए कुछ ना करें जहाँ से हम आए हैं, लेकिन एक जज्बा और एक जो कुछ कर गुजरने की तमन्ना हर एक इंसान में रहती है कि मैं शायद अपने देश के काम आ जाऊं। तो मेरे ख्याल से अपने आने वाली जनरेशन, अपने बच्चे या उनके बच्चे, अगर आप पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, या आपके दोस्त, उनको आप मोटिवेट कर सकते हैं और ज़रूर आर्म्ड फोर्सेस का हिस्सा बना सकते हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग ओवर हियर। इट्स एन ऑनर कि आप यहाँ पर आए और हमारे लिसनर्स और जो भी हमें देख रहे हैं उनसे बातचीत करी। मैं एक बार फिर से गुजारिश करूँगा और आपके वहाँ पर ये अर्ज़ी भेजूँगा कि आपको एक बार दोबारा भेजें, क्योंकि हमारी मन की बातें आपके साथ ख़त्म नहीं हुई। टाइम बहुत कम मिलता है, स्टूडियो टाइम, लेकिन हम आपसे और आपके एक्सपीरियंसेस जानना चाहेंगे और किस तरह से आप ने ट्रेनिंग करी, इसके बारे में कुछ जानकारी और देना चाहेंगे, तो वो हम अगले प्रोग्राम के लिए बचा के रखते हैं। बट थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, एंड वी विल सी यू नेक्स्ट टाइम फॉर श्योर। Thank you so much for having me. It was a pleasure. मैं आपसे विदा लेता हूं और अगले वीक कैलगरी फोकस में एक बार दोबारा आपसे जुड़ूंगा। आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं प्रोग्राम कैलगरी फोकस ओनली ऑन पंजाबी नेशनल टीवी। अपना ध्यान रखें, मस्त रहें, खुश रहें और सुरक्षित रहें। मिलते हैं अगले वीक ऑन कैलगरी फोकस। थैंक यू।